Hello everyone. So welcome back to Kalama IAS Academy, and we are doing with this current age, and in that current age we are doing the most important topics which are very much probable to appear in the UPSC prelims 2025. So let's see the topic. The topic, this was in the news that unified pension scheme have been launched by the government, central government. And under this unified pension scheme, what is there? So already there has been old pension scheme, new pension scheme is already there has been there, but now this unified pension scheme have been launched. So what is the main purpose of this? The main purpose of this unified pension scheme is to have a balance between the old and the new pension schemes, because there have been very rising demand of this unified pension scheme. Actually, the people wanted that the government should be bringing old pension schemes actually, but this that these kinds of pension and other kinds of salaries, all these kinds of things, so these are coming under the revenue expenditure. So government always try to reduce the revenue expenditure, right? And therefore the government had shifted from the old pension scheme to the new pension scheme 2004. But with the lots of demands coming from the different parts of the country, different section of the society, that is obviously the government servants. So this unified pension scheme have been launched now, and it will be now implemented from the 2025. So let's understand this. We will also be understanding what is the difference between unified pension scheme and new pension scheme as well as the old pension schemes. So that differences we will also be looking at. Again, all these things we have already covered under the current age program. So we are only dealing here very selective topics which has the high probability to appear in the UPSC prelims 2025. So this unified pension scheme, the cabinet had approved this unified pension scheme, and it will be implemented from the 1st of April 2025. So now from the first new session of the financial year 2025-2026, so this unified pension scheme will now be implemented. The key aspect of this unified pension scheme is that employee को एक guaranteed assured pension मिलेगा. How much? Up to 50%. Right? Let's understand this. Okay, let's say that one employee at the age of 30 years, he got the job. Right. So in most of the cases, in the government services, the maximum age limit is up to 60 years. So at the 60 years, the person will be retiring. So here the person has served for the 30 years for the country. Right. So this person will be eligible to have the maximum benefit, means minimum service should be 25 years. So that it has already covered. So this person will be having this, let's say that this person is some XYZ. So this person will be getting the maximum permissible pension under unified pension scheme, and that is how much? जो last 12 month में जो उनका average basic pay रहा है उसका 50%. let's say कि last 12 month में उनका average basic pay जो है वो 50,000 है, 50K है. So उनको कितना सैलरी मिलेगा? पेंशन कितना मिलेगा? 25K पेंशन उनको दिया जाएगा आफ्टर द रिटायरमेंट एवरी मंथ. राइट? सो दैट इज देयर. लेकिन अब ये फिक्स्ड नहीं है. दिस इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स. ये तो उनके लिए है जो 25 इयर्स ऑफ द सर्विस कर चुके हैं इन द गवर्नमेंट सर्विस. अब लेट्स से दैट सम पर्सन हैड गॉट द गवर्नमेंट सर्विस एट द एज ऑफ 40. Right, so they will be doing the service only for the 20 years. तो 20 years के लिए ये completely 25,000 नहीं eligible होगा, means completely 50% नहीं eligible होंगे. Proportionately कम किया जाएगा with lesser year of the services. तो 20 years के लिए हो सकता है कि अगर 50K सैलरी था last 12 month का, तो हो सकता है कि 20,000 मिलता हो, 20,000 मिले. राइट. या हो सकता है कि कोई 15 साल ही सर्विस किया हो तो हो सकता है उनको 18,000 मिल जाए. या हो सकता है कि कोई 10 साल सर्विस किया हो तो उनको
मिनिमम सैलरी जो कुछ ना कुछ सैलरी तो दिया ही जाएगा, दैट विल बी कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट in proportion they will be getting the reduced salary, means percentage of the population, percentage of the assured pension उसका change हो जाएगा, because 50% is maximum only for those who has 25 years of the service. I hope you have got this. So that is there. And जिन्होंने 10 years से कम सर्विस किया है, so they are not eligible for this unified payment service, this pension service. They will not be getting पेंशन अंडर दिस. सो मिनिमम सर्विस जो है वो 10 साल का होना ही चाहिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर. तो 10 साल का जिसका भी सर्विस है उसको कम से कम 10,000 पर मंथ एश्योर्ड पेंशन जरूर मिलेगा, राइट. सो दैट हैज आल्सो बीन देयर. नाउ लेट्स से another person ABC is there. Now this ABC person at the time of retirement, this ABC person had the 18,000 as the salary, right. तो अगर इसका 18,000 का 50% करेंगे तो ये 9,000 ही होता है ना, ये 9,000 ही होता. लेकिन अगर इन्होंने 10 साल कम से कम सर्विस कर लिया है तो ऐसे पर्सन को 9,000 नहीं, मिनिमम 10,000 तो जरूर मिलेगा अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, राइट. सो मिनिमम 10,000 रुपीज विल बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन अंडर दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम. उतना पेंशन उनको जरूर मिलेगा, राइट. सो दैट इज देयर. देन family pension is also there. You know that in the old pension schemes also, the person who was doing the job and after the death of that person, either the widow or widower, they used to get the money, right. Half of the salary, half of the pension of the person who is getting. तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 60% मिलेगा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 25,000 सैलरी मिल रहा था, तो इसका 60% अगर वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, XYZ पर्सन का डेथ हो जाता है, अब उनकी वाइफ बची है, तो उनके वाइफ को मिलेगा 60% ऑफ द सैलरी, दैट इज 15K दे विल बी गेटिंग. सो दैट इज आल्सो द प्रोविजंस. एंड ऑल दीज पेंशंस, so they will also be getting the DRNs allowances, DA जो मिलता है, because inflation is there, so in every 6 months or so like DA increases, right. क्योंकि ताकि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, क्योंकि लेट्स से कि एक पर्सन 60 साल की एज में रिटायर्ड किया, राइट. अब वो 80 इयर्स तक वो अलाइव है, तो ये 20 साल का डिफरेंस हो गया. अब 20 साल में अगर 5% 6% इन्फ्लेशन है तो उसकी सैलरी तो उसकी पेंशन तो कुछ नहीं बच जाएगी, राइट. बहुत कम हो जाएगा, 1/4 से भी कम हो जाएगा, राइट. तो इसलिए क्या होना चाहिए कि ये DRNs अलाउंस के साथ मिलना चाहिए. सो DRNs रिलीफ will also be provided to the person in this pension, and in addition to this a lump sum amount will also be provided. We will be looking what will be that lump sum amount. Now, so the employees contribution, see, in the old pension scheme there was nothing called that the employee contribution, but in the new pension scheme there was employees contribution, that was the 10% of the salary जो है वो बेसिक प्लस DA का जाता था एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन, और गवर्नमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करती थी 14% ऑफ दैट. सो 14 और 10 24% अप्रोक्सीमेटली ये सेव हो जाता था हर एक मंथ फॉर द रिटायरमेंट पर्पस, राइट. एंड रिटायरमेंट एज वेल एज फॉर द पेंशन पर्पस, राइट. अब जाके इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम. नाउ द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन विल बी 10%. 10% ऑफ व्हाट? बेसिक पे प्लस DA. इसका 10% दिया जाए, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रखा जाएगा, प्लस गवर्नमेंट नाउ विल बी कंट्रीब्यूटिंग 18.5%. सो द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द 14% टू द 18.5%, इट इज इंक्रीजिंग, राइट. एंड फुल एश्योर्ड पेंशन तभी दिया जाएगा जब 25 ईयर्स का सर्विस हो, एंड 10 ईयर्स मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस हो गई तभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एलिजिबल हो पाएंगे. 10 ईयर्स से 25 ईयर्स का जो जिनका सर्विस होगा तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल के बेसिस पे उनका सैलरी फिक्स कर दिया जाएगा, और मींस सैलरी नहीं पेंशन फिक्स कर दिया जाएगा जो उनको मिलेगा, राइट. एंड दे विल आल्सो बी हैविंग अ चॉइस टू हाउ टू वेदर दे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम द न्यू पेंशन स्कीम टू द यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नॉट.
So that is there. Now, inflation indexation is very much required. Just now we have talked about, because ये जो पेंशन मिल रहा है, एक तो ये पेंशन बहुत ज्यादा होता नहीं है, राइट, एंड वो भी पेंशन अगर इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स्ड नहीं होगा, then there will be no meaning of that pension. The pension will be very meager, right? So therefore the government had decided this will be indexed with the inflation. Inflation, that is the all India consumer price index for the industrial workers. So this is the index through which the pension will be linked, and based on this inflation, based on this index, whatever will be the inflation, so on the basis of that the pension will be revising time to time, right? Then this point is very confusing. The UPSC aspirants not able to understand this point. That is lump sum payment at the retirement. How much will be the lump sum payment at the retirement? Now, for this, let's assume that a person has done 30 years of the service. 30 years of service, right? So in the 30 years of the service, how many 6 months of the service they have done? 66 months service they have done. 66 months service, right, they have done. Now, it is said that at the time of retirement, whatever the monthly emoluments they are having, let's say that the monthly emoluments they are having 50,000 rupees, 50,000 rupees. So at the time of retirement, 1/10 of the monthly emoluments, that is pay plus DA, so iska 1/10, that is 5,000 rupees. So 5,000 rupees they will be getting for every 6 months. 5,000 they will be getting a lump sum amount, 5,000 they will be getting for every 6 months, and there are 66 months. So overall there will be around 3 lakh rupees they will be getting. So this is the way to calculate the lump sum payment. Let's say that some person has been done the सर्विस डन फॉर द 30 ईयर्स, तो उस 30 ईयर्स में 60 जो होगा वो 6 मंथ का सर्विस होगा, और एज्यूम किया हमने दैट 50,000 का उसका सैलरी था, तो उस 50,000 का 1/10 जो है वो 5,000 हो गया, 5,000 इंटू 60 हो गया 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख रुपीज एश्योर्ड इनको लंप सम पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ये लंप सम पेमेंट मिलने से ये नहीं हो जाएगा कि अब उनके जो पेंशन है उसको कम कर दिया जाएगा, कि उनका पेंशन इसके प्रोपोर्शन में कम कर दिया जाए, दैट विल नॉट बी देयर। There will be no effect of the amount of the assured pension. Assured pension तो जो है वो होता ही रहेगा, जो अगर 25 years of the service है तो 50% of the basic plus DA का जो assured pension है, so that will keep on continue, right? So that is there. Now, the employees will be getting the choice, and currently this is only for the central government employees. Maybe that later on for the state government employees also this will be coming, right? So central government employees, they will be getting the choice whether they want to shift from the new pension scheme to the old pension scheme, because they will be having all these kinds of benefits after that, right? Now let's say what are the differences between the old pension scheme, new pension scheme and the unified pension scheme, and which one is better. So first of all, the eligibility. In the eligibility sections, so old pension schemes, there were the government employees used to get, it was given after the independence time, right? तो 1950 से ये old pension scheme लागू कर दिया गया था, और वहां से ये implement हो रहा था। जो new pension scheme है उसको 2014 में implement किया गया। But one thing very important you should be remembering, कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, सो दैट इज नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज फॉर एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 years of the age. This is very important point. So in new pension scheme that was there, it was for the all citizens of India. Then the current जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च होगा, मींस इंप्लीमेंट होगा, सो under that all central government employees are there. There is no state government employees. State government, if they are willing to bring, they can bring their own unified pension scheme on the basis of this central's unified pension scheme, right? So that is there. Then there is assured pension.
in the old pension schemes also there was assured pension that was the 50% of the last drawn salary, और वहां पर ये 25 years 10 years 15 years इस सब का इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं था, है ना, कि जो जिस सैलरी पे रिटायर करता था उसका 50% उनको पेंशन मिलने लगता था, राइट। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स में ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 25 years of the service if they have done, then there will be assured 50% of the average basic drawn from the last 12 months. So that is there, we have already understood by the calculation. And अगर वो मिनिमम 10 साल का सर्विस किए हैं, कोई 10 साल के सर्विस से नीचे कर रहा है, so they will not be eligible for the unified pension scheme, right? So minimum 10 years of the service is required. And अगर कोई 10 साल 12 साल 18 साल 20 साल 25 साल तक किया है तो वो उनको 50% नहीं मिलेगा, 50% से रिड्यूस होके जितना प्रोपोर्शन होगा उतना प्रोपोर्शन फिक्स करके गवर्नमेंट एवरी मंथ सैलरी देगी, पेंशन देगी। न्यू पेंशन स्कीम्स, in this there was no assured pension on the monthly basis. Actually whatever the contribution was there from the employee as well as the government, so the government used to put that in the market, and based on that approximately 8 to 9% or sometimes 10% of the interest rate they will be getting. And एक जब रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा, उस लमसम अमाउंट का 60% जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, that will be tax free, right, and rest of the 40% they will have to reinvest again, and उससे time to time उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड पेंशन वाला कोई बात नहीं था in the new pension scheme, right? Therefore everyone was criticizing this new pension scheme because already यहाँ पर जो old pension scheme में सब कुछ फिक्स था, but that fixed thing was removed. Now regarding the minimum pension scheme, in the old pension scheme there was minimum of 9,000 per month. This was, चाहे वो कितनी भी लो पोस्ट पे क्यों ना हो, रिटायर कर गए तो उनको कम से कम 9,000 पर मंथ तो मिलता ही था। बट इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स नाउ दिस हैज चेंज टू द 10,000 per month, but provided the person have served for at least 10 years of the service, and there was no minimum pension in case of the new pension scheme because वहां पर तो कोई पेंशन assured ही नहीं था पर मंथ, राइट। देन फैमिली पेंशन इन द ओल्ड पेंशन स्कीम्स, सो अगर जिस पर्सन का पेंशन था, जिस पेंशन ने सर्विस की, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उनके वाइफ को या उनके माइनर चाइल्ड को ये मिलता था, पैसे मिलते थे, दैट इज पेंशन मिलता था, वो हाफ ऑफ द पेंशन जो उस पर्सन को मिल रहा था उसका मिलता था, राइट। सो इट वाज ग्रांटेड टू द विडोवर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड हु ज्वाइंड बिफोर द 31st of December 2003, क्योंकि उससे पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम था, उसके बाद तो फिर न्यू पेंशन स्कीम में आ गया। तो उनको क्या मिलता था कि 25% उनको मिलता था, क्योंकि सैलरी का 25%, सैलरी का 50% पेंशन तो उनको मिल रहा था जो अलाइव थे, जिन्होंने सर्विस की है, उनके फैमिली वाले को उनका भी हाफ मिलेगा, 25% मिलता था। यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो पेंशन का 60% यहाँ पर मिलेगा, नॉट 50%, यहाँ पर 60% मिलेगा। 60% of the employees pension will be provided to the family in case of the employer's demise, right? And in case of the new pension benefit was there, benefit derived from the accumulated pension wealth, तो wealth जितना जनरेट होता था क्योंकि वो मार्केट में लगता था तो उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता था, राइट। देन इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है या नहीं है पेंशन। So the old pension schemes, so this was also indexed with the inflation. New pension scheme में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि न्यू पेंशन स्कीम्स को लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत कम बेनिफिट था, राइट। देन इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन इज देयर इन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन से के साथ ये इंडेक्स्ड है। देन रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In old pension scheme, there was no contribution from the employer side. Employers means employee side के साथ जो employee थे उनके तरफ से कोई contribution नहीं होता था, सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती थी अपने तरफ से 50% ऑफ द सैलरी का वो प्रोवाइड करते थे पेंशन। बट इन केस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, employee contributed 10% whereas the employer contributed 14%। तो ये 10% और 14% था, टोटल मिला के 24% जो है वो इन्वेस्ट हो जाता था। नाउ इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब 10% इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे एंड इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कौन है यहाँ पर, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड
from 14% to 18.5%, right? So it has increased from the 18.5% by the employer and 10% by the employee. So ये टोटल 28.5% हर एक मंथ बेसिक प्लस डीए का वो चला जाएगा, वो सेव होता रहेगा, राइट? एंड आफ्टर द retirement, these kinds of benefits they will be getting. So this year in the UPSC Prelims 2025, it is expected that the UPSC may ask from the Unified Pension Scheme, or when UPSC asks, so it is not necessary that they will be asking only about the Unified Pension Scheme. There may be some statements linked with the old pension scheme as well as the new pension scheme as well, right? So therefore we have understood that in full detail, and I have already covered all these things in the current age sessions, right? So in the current age, we provide you the material for entire years, like 1.5 years of the material we are providing, that is in the booklets. On that booklet, there are also workbook that is we are providing. Also, there is workshop available in that respect. So workshop are there. So there are 13 workshop sessions in that. Along with that, there are 8 case snippet sessions. So case snippet session for the entire 1.5 years of the current affairs, we will be trying to cover under this, and that will be on the module wise, because many of you are interested in the module wise study. So 8 modules, entire syllabus is current affairs is divided into 8 modules, that is case snippet 365, polity and governance, economy, geography, environment, science, technology, IR, security, society, government schemes and the history. ये पूरा holistic cover हो जाएगा. इन सब सारे के lectures भी होंगे, 2 to 3 lectures will be there for each of the subjects, जिसमें पूरे comprehensively cover करने की कोशिश किए जाएंगे 1.5 years of the current affairs. And you will also be giving tests. So there are 23 tests, including the full length test, that is 2 full length tests are there. Then there are sectional tests for each of the subjects. Then there are also 13 workshops are there. So 3-point program is there, that is you will also be getting the material, you will also be getting the lectures, you will also be getting the tests, right? So this is a 1-point solution for all the current affairs for the 2025 prelims. So do check it out. That is all from my side, and in these sessions we are only covering the most important articles, most important things which are most probable in UPSC Prelims 2025. These are not comprehensive. All these topics have been comprehensively covered under the current age program. So I hope you have understood these topics. Thank you very much.